Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss mechanics of solid, engineering mechanics, their introductions, then we will move forward to the applications of mechanics of solid, different types of stresses, normal stress, shear stress, bearing stress, and then we have to cover the problems of lecture number 1 that is all about the normal stresses. So let's start from engineering mechanics. First of all, engineering mechanics is divided into three subgroups. First one is rigid body mechanics. We have to study the external effect of forces on a rigid body. When we have to apply the forces on a rigid body, on a solid body, so their types of forces, their types of effect of forces, we call it rigid body mechanics. Their main types, our topic is static mechanics or dynamic mechanics. Second branch is deformable body mechanics. Today our presentation, our topic is related to deformable body mechanics. Deformable body mechanics deals with relationship between external applied load and their internal effect on body. So it's mean that if we have to apply the force external on the body, it will have to do some internal effect on the body. I am saying that when we have to apply the force on the body, it will cause some deformation or some effect within the body. And their types of mechanics, their types of forces and their effect is called deformable body mechanics. And we call it mechanics of solid, we call it strength of material. And the third subgroup is fluid mechanics. Now, moving to the introduction, mechanics of material is branch of applied mechanics that deals with behavior of solid bodies subjected to various types of load. जब हमारे पास एक solid body, उस पर हम वेरियस टाइप्स ऑफ लोड अप्लाई करते हैं और इसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं ताकि जब हम उस पर लोड अप्लाई करें तो ये बॉडी किस तरह बिहेव करता है। तो इस तरह के मैकेनिक्स को, इस तरह के फोर्सेस को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। इट इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। इट इज बेसिकली द इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेज। इट्स मीन दैट वी हैव टू स्टडी द इंटरनल इफेक्ट्स or the internal behavior of the body of the material, that how they react with the stimuli. So it's all about that how a body react to the stimulus. It is the combination of physical, mathematical and other techniques to predict the behavior of solid material that are subjected to mechanical or thermal loading. इसमें मैथमेटिकल और फिजिकल टेक्निक्स होते हैं जिससे हम किसी बॉडी से, किसी सॉलिड मटेरियल की बिहेवियर को प्रेडिक्ट करते हैं, इसको हम मालूम करते हैं जबकि ये मैकेनिकल और थर्मल लोड को सामने हो जाए। मेरी बात का मतलब ये है कि अगर हम एक सॉलिड मटेरियल लें और इस पर हम मैकेनिकल और थर्मल लोड अप्लाई करें और ये हम मालूम करते हैं कि ये कैसा बिहेवियर करता है या हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि इसका बिहेवियर किस तरह है, तो इसी तरह के मटेरियल को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद बिहेवियर ऑफ सॉलिड मैटर अंडर एक्सटर्नल एक्शन. Now, what is their types of external action? What is their type of stimulus? So, the external action may be, वो external action क्या हो सकता है? External force हो सकता है, temperature change हो सकता है, displacement हो सकता है। जब हमारे पास एक solid body होती है और हम इस solid body पर forces अप्लाई करते हैं, हम उस पर स्टिमुलस अप्लाई करते हैं, तो वो स्टिमुलस किस किस फॉर्म्स में होती है? वो होता है एक्सटर्नल फोर्स के फॉर्म में या टेम्परेचर चेंज के फॉर्म में या डिस्प्लेसमेंट चेंज के फॉर्म में। ये हमारे पास स्टिमुलस है, ये हमारे पास एक्सटर्नल एक्शन है जो किसी बॉडी पे लगता है। और जब हम इस बॉडी की मैकेनिक्स को, इसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो इस तरह की ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स को हम सॉलिड मैकेनिक्स कहते हैं या मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड किस जगह पर इस्तेमाल होता है? इन सिविल इंजीनियरिंग टू डिजाइन ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इन देयर फाउंडेशन। इफ यू हैव टू डिजाइन अ स्ट्रक्चर्स फॉर अ बिल्डिंग और इफ यू हैव टू डिजाइन अ फाउंडेशन फॉर अ बिल्डिंग, we have to take a help from mechanics of solid. In geomechanics, to model shape of planet tectonics and predict earthquake. We also have the use of mechanics of solid in geomechanics. Geomechanics is all about related to the earth. So we have to shape the model of the planets, that how tectonics works, and we have to predict the earthquakes. So if we have to predict the earthquakes, if we have to gain knowledge about the tectonics, that how earthquake can be generated, so we must have to dive into the deepness of mechanics of solid. We have to dive into the deepness of mechanics of solids and their structures. If we have to make a building that is earthquake resistance, so you will move to the mechanics of solids to develop that type of structure for a building that is resistance to earthquake. In mechanical engineering, to design load bearing components for vehicles, for generation and transmissions. It have also used in a mechanical engineering, we have to design their types of vehicles, their types of power generation, their types of transmissions that have the ability to design to bear the load, that have the ability to bear the load. So इसमें हम क्या करते हैं? हम इस तरह के व्हीकल्स बनाते हैं, इस तरह के पावर जनरेशन, इस तरह के ट्रांसमिशन बनाते हैं जो कि लोड को क्या कर सकता है? बियर कर सकता है, इसको बर्दाश्त कर सकता है। तो इस सारी चीज़ों में हम क्या यूज़ करते हैं? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। नाउ stresses and their types. So there are different types of stresses. First of all, we have to discuss the definition of stress. What is stress? When external force is applied on body, it undergo deformation which is resisted by the body. The magnitude of resisting forces is numerically equal to applied force mathematically.
मेरी बात का मतलब ये है कि हमारे पास ये एक बॉडी है और हम इस बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी डिफॉर्म हो जाता है, लेकिन डिफॉर्मेशन होने से पहले ये बॉडी इस फोर्स के अगेंस्ट वो क्या करता है, वो रिएक्शन शो करता है और इसी ही रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होता है एक बॉडी पे एंड इट अंडरगो डिफॉर्मेशन, और इसमें डिफॉर्मेशन आता है विच इज रेजिस्टेड बाय द बॉडी, जो कि ये बॉडी रेजिस्ट करता है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टिंग फोर्सेज ये बराबर होता है अप्लाइड फोर्स की। In mathematically, the internal resisting forces per unit area of the body is called stress. Stress is all about the pressure induced in the body. जब आप किसी बॉडी पे प्रेशर लगाता है पर यूनिट एरिया, किसी एरिया पर जब आप प्रेशर लगाते हैं तो वो जो रेजिस्टेंस शो करता है, इसी ही रेजिस्टेंस को हम स्ट्रेस कहते हैं। और रेजिस्टेंट फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस को हम प्रेशर भी कहते हैं। स्ट्रेस बराबर होता है रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया की, और प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया की। Now, stress is denoted by sigma and resistance force is denoted by P and area is denoted by A. So, the unit of the stress is Newton per meter square because the unit of the force is Newton and the unit of area is meter square. So, the unit of stress will become Newton per meter square. Or we also write it as kilo Newton per meter square, or 1000. Kilo means 1000 Newton per meter square. And we also write it megapascal because Newton per meter square is called Pascal. We also call it kilopascal, megapascal, gigapascal. This is the prefixes. Kilo is used for 10 raised to the power 3, mega is used for 10 raised to the power 6, giga is used for 10 raised to the power 9. So, ये different types of unit है stresses की। Stresses की दूसरी भी मुख्तलिफ units है like PSI, pound per square inch. Pound is denoted by LB per lebra, and per inch square, R it is denoted by lebra per foot square. We call it pound per foot square. Other unit is KSI, kips per inch square. Kips is kilo pound per square inch or kilo pound per foot square. This is the different types of unit. This one is the SI units, and these all are the US units or American units of stresses. Now, normal stress caused by axial loading. You have to go through about the axial loading, that what is axial loading and what is normal stress. Normal stress is that types of stress when the force is applied on the body and that force is perpendicular to the cross sectional area. We call that type of stresses, we call that types of forces is called normal stress. Normal stress is either tensile stress or compressive stress. Compressive force will be tend to shorten the member, tensile force will tend to lengthen the member. First of all, we have to talk about the axial loading. That what is axial loading? Take that this is our tube, and we have to apply the load that is parallel to this tube. We call that types of loading is called axial loading. Now, what is normal stress? Normal stress is that types of stress. This is the cross sectional area of the tube or the cylinder. This is the cross sectional area. So if we have to apply the force on the body, and that force is perpendicular to this area, this is the area, and we have to apply the force that is perpendicular to this area, we call that type of force, and the stress produced due to that type of force we call it normal stress. द सिंपल डिफिनीशन इसका ये है कि नॉर्मल स्ट्रेस वो स्ट्रेस होगा जब हम कोई फोर्स लगाते हैं और ये फोर्स इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर हो, वो इसके साथ 90 डिग्री पे हो, तो वो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा वो नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगा। नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल भी हो सकता है और कंप्रेसिव स्ट्रेस भी हो सकता है। टेंसाइल कौन सा होगा? जब ये दोनों तरफ से अंदर की तरफ से प्रेशर हो तो इसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं, क्योंकि ये इस सिलेंडर को कंप्रेस करता है। जब ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे के अगेंस्ट हो और आउटवर्ड हो तो डेट टाइप्स ऑफ फोर्सेज वी कॉल इट टेंसाइल फोर्सेज, एंड द स्ट्रेस डेट प्रोड्यूस ड्यू टू दीज फोर्सेज वी कॉल इट टेंसाइल स्ट्रेसेस. Now, compressive force will tend to shorten the member. If you have to compress the body, so it will shorten the body, and we call it compressive force. Tensile force will tend to lengthen the body. Tensile force is that types of force that is away from the body and they can elongate the body, that can be lengthen the body, so we call it tensile force. Now, normal stress should always perpendicular to the cross sectional area. We also discussed earlier that normal stress should always be perpendicular to the cross sectional area, that it should always be at a 90 degree to the cross sectional area, and we call it normal stress. The cut is always parallel to the cross section to the considered area. Now, what it means that if this is the tube and we have to cut this tube along the cross sectional, so the cut that we made that is always parallel to the considered area. This is our area, and the cut that we apply is parallel. So the cut will be parallel, and the force we applied is the perpendicular to this type of area. This is the area, this is the cross sectional area, और फोर्स क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, और ये जो स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा इसको हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं. द यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज स्ट्रेस. स्ट्रेस शुड आल्सो बी डिफाइंड एज यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, कि इस मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना है.
इसी stress is normal stress is denoted by a sign that we call it sigma. Now the second type of stress is we call it shear stress. Shear stress is force parallel to the area resisting causes shearing stresses. वो force जो parallel हो area के खिलाफ, जो parallel हो area को, जो parallel हो cross sectional area को, और वो जो resistance show करता है, इसको हम क्या कहते हैं? shear stress कहते हैं. Shear stress should always parallel to the cross sectional area and it is also called tangential stress. Now ये कौन सा stress है? अगर हमारे पास ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब पे हम ऊपर से फोर्स लगाते हैं. नाउ दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस वन एंड वी कैन अप्लाई द फोर्स that is parallel to this cross sectional area. So that type of stresses we call it shear stresses, and that types of forces we call it shear force. So shear force per unit area we call it shear stress. Like normal stress is the force that is perpendicular to cross sectional area per unit area, we call it normal stress. Same like that, the force that is parallel to the cross sectional area per unit area we call it shear stress. Like resultant shear force, this is the shear force that is parallel to the cross sectional area per unit area, we call it shear stress, and it is denoted by that type of sign. The resistant shear force is denoted by V and the area is denoted by A. Now we are moving toward the third type of stress, and that is bearing stress. It is the contact pressure between two separate bodies. If separate bodies are in contact with each other, so the stress that is produced to the compressive or tensile forces, we call it bearing stress. Now allowable axial force. Now what it's mean that allowable axial force? Structural members have designed for maximum allowable stress. If you have to design a structure, so we have to make it for a maximum allowable stress. We have to make a building, we have to make a structures that have to bear the maximum stress, that have the potential to bear a lot of stress. Maximum allowable load can easily derive from the formula of normal stress. We have to find the maximum allowable load, and that is derived from the normal stress. दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस डेट इज अलाउ का मतलब यहाँ पर ये होगा कि वो स्ट्रेस जो एक बिल्डिंग, जो एक ऑब्जेक्ट बर्दाश्त कर सकता है, उस स्ट्रेस को हम अलाउबल स्ट्रेस कहते हैं. तो फोर्स अलाउबल पर यूनिट एरिया सेम एज डेट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस. फोर्स अलाउ, इसको हम इस एरिया को हम इस तरफ ले आते हैं तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्ट्रेस अलाउ मल्टीप्लाई बाय एरिया. नाउ रेशियो ऑफ सेफ्टी, व्हाट इज रेशियो ऑफ सेफ्टी? रेशियो ऑफ सेफ्टी इज डिनोटेड बाय दैट टाइप ऑफ साइन एंड अल्टीमेट लोड डिवाइड बाय अलाउबल लोड, वी कॉल इट रेशियो ऑफ सेफ्टी. नाउ व्हाट इज अल्टीमेट लोड एंड व्हाट इज अलाउबल लोड? अलाउबल लोड, वी आल्सो डिस्कस इट अर्लियर, दैट allowable stress is called allowable load that a building can bear, and ultimate load is that type of load, the load that we applied on the structure, we call it ultimate load, and the load that bear the body, we call it allowable load. So it's mean that allowable load is always greater than ultimate load, because if we have to increase the ultimate load over the allowable load, our design will be break, our design will be collapse. So we have to make a building that have a maximum allowable load, and we can apply the ultimate load less than allowable load. So our load will be safe, our structure will be safe, and we call it ratio of safety. So we must have that the allowable load should always be greater than the design load. Allowable shear stress should always be greater than the allowable design load. So these are three types of loading. First of all, we have to discuss about the axial load. Then in the third lecture, we have to discuss about the twisting load, that what is twisting load. Then we will move forward to the bending load. So these are different types of load. Axial load, we discuss it, that the load that is perpendicular to the cross sectional area, we call it axial load. Now we are moving toward different types of supports. We can also discuss it in the previous lecture, that one reaction support is called ruler support. If the body is supported by only one direction, like if this is the support and we can apply the load over there, so these stresses or this support can only have the potential to bear the load of this type of force, but this load didn't have the potential to resist this type of load. So if we have to apply the load in the x direction, so this bar will be moved, but if we have to apply the load in the y-axis, so this support will have to bear that type of load. So we call it simple support or ruler support and one reaction support. Here one reaction is produced, like that type of ry is produced. Two reaction supports, this is that type of support that can bear two types of loading, like pin support, that if you have this like pin, so if we have to apply the load from the upper side or from the left side, so this will not go to the right direction or this will not go to the downward direction. So it can support the ry and it can support the rx. So the reaction forces are two, so we call it two reaction support or Hinc support. And the third one is the three reaction support. That type of support is called flex support, and that is just like that. If we have to apply the load on
If we have to apply the load in this direction, so it will produce a reaction force and we call it Rx. If we have to apply the load in this direction, so it will resist it and we call it Ry support. And if we have to apply the movement, if you have going to move or to tend the bar, so it will resist and we call it movement. Yet movement should always be 0. So when the body have to resist three types of supports, three types of reactions, we call it fixed support. Now here is the note that neither the length of the section nor the material form can affect the calculation of the stress. ये बात मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि इस बात का मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ अ सेक्शन और जिस मटेरियल से ये बना है ये दोनों स्ट्रेस के कैलकुलेशन में कोई इफेक्ट नहीं डालता, मतलब कि इस पर इन्हिसार नहीं करता. नाउ fixed support can be obtained in concrete by casting beams in column monolithically and by welding joint on steel. ये बात भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि fixed supports हम कैसे बना सकते हैं स्टील में, और ये हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी और आगे स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी पढ़ेंगे कि हम कैसा एक कंक्रीट से हम fixed support कैसे बना सकते हैं. तो जब हम कास्ट करेंगे बीम और कॉलम को मोनोलिथिकली और फिर हम इसके जॉइंट्स को वेल्ड करेंगे तो इससे हमारा जो सपोर्ट बनेगा वो fixed support बन जाएगा. So now we are moving towards the problems and we are starting from problems number 104. That is, we have a hollow tube, steel tube. The inside diameter of the tube is 100 mm and we have to carry a tensile load of 400 kilonewton. This is the tensile load, this is the tensile force. Outside diameter, we have to find the outside diameter and the stress is given, that is 120 meganewton per meter square. Now, the first thing that you will have to learn is that first of all you have to write the given data, then the required data, then we will move forward to the solutions, the pre-body diagram, and then we will have to dive into the question that where is the units exchanging. If there is any unit that is not related to each other that have to need to exchange them, so first of all we have to take these types of problems. So first of all, stress limits that is given 120 megapascal. इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास एक स्टील ट्यूब है, इसका इनसाइड जो डायमीटर है वो 100 mm है, वो टेंसाइल लोड ले सकता है 400 किलो न्यूटन का, और इसका आउटसाइड डायमीटर हम मालूम करते हैं और ये जो स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है वो है 120 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नाउ स्ट्रेस लिमिट, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. Diameter is all about related to area, so it's mean that we have to find the area. So area is being equal to force divided by stress. The force that is applied by 400 किलो न्यूटन, किलो का मतलब ये है 1000 10 raised to the power 3 डिवाइडेड बाई 120 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 120 मेगा का मतलब है 10 raised to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो द एरिया वुड बिकम डेट. सो हमारे पास एरिया मालूम हो गया जो कि 3.33 मल्टीप्लाई 10 raised to the power -3 मीटर स्क्वायर के बराबर है. नाउ हमारे पास जब हम एरिया से डायमीटर फाइंड करते हैं तो हम यूनिट्स को देखेंगे. यहाँ पर हमारी यूनिट है मीटर स्क्वायर और यहाँ पर है mm स्क्वायर. तो फिर हम सबसे पहले हम इस mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में तब्दील करेंगे तो 100 mm बराबर हो जाएगा हमारे पास 0.01 मीटर स्क्वायर की. नाउ 0.1 मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ये एक जीरो नहीं है. नाउ एरिया बराबर है हमारे पास पाई डी स्क्वायर, पाई ओवर 4 डी स्क्वायर. पाई यहाँ पर हमारे पास 2 डायमीटर है तो आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर. सो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4. वी हैव टू फाइंड द कैपिटल डी, वी हैव टू फाइंड द आउटर डायमीटर, वी हैव टू फाइंड द आउटसाइड डायमीटर. सो पुटिंग द वैल्यूज 3.14 पाई, और नीचे अपनी जगह डी स्क्वायर अपनी जगह और डायमीटर जो कि अंदर है वो है 0.1 मीटर स्क्वायर और इस पर स्क्वायर है. सो 4 इस तरफ आ जाएगा और 3.4 भी नीचे आ जाएगा तो इस तरह बन जाएगा. एरिया हमको गिवन है जो कि ये है 3.33 और ये 4 इस तरफ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये 3.14 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो ये डिवीजन में आ गया और ये अपनी जगह रह गया. 0.1 मीटर स्क्वायर को जब हम इस पर स्क्वायर ले लेंगे तो इससे आ जाएगा 0.01. नाउ इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे आ जाएगा 4.242 मल्टीप्लाई 10 raised to the power -3. डेट विल बिकम इक्वल टू, नाउ हियर इज डी स्क्वायर -0.1 को हम इस तरफ ले आएंगे इसी आंसर की तरफ तो ये प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 0.004242 प्लस 0.01. नाउ ये 0.0042 किस तरह बन गया, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास है 4.242 मल्टीप्लाई 10 raised to the power -3. इस पॉइंट को 3 इनसे लेफ्ट की तरफ इसको शिफ्ट कर दे तो ये बन जाएगा 0.00442, ये इस तरफ बन जाएगा. ये पॉइंट इस जगह पे है ना तो ये इस तरफ आ जाएगा 1 2 3. तो इसका मतलब ये है कि इस 4 से ये 3 इस तरफ आ गया 1 2 3 4 1 2 3 तो 10 raised to the power 3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पर ये इस तरह लग गया प्लस 0.01 लग गया. इसको हम प्लस करेंगे तो इससे ये आ जाएगा. डी स्क्वायर है तो हम दोनों साइड पर अंडर रूट ले लेंगे तो यहाँ पर भी अंडर रूट, यहाँ पर भी, यहाँ पर जब हम अंडर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से कट दिया जाएगा और डी बराबर हो जाएगा अंडर द रूट 0.0142 के. तो डी हमारे पास बराबर हो जाएगा 0.11 मीटर का. आर
119 mm का और 120 mm का जब हम इसको अप्रोक्सीमेट करें, क्योंकि जब हम इसको mm में तब्दील करेंगे तो हम इसको 1000 पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इसको 1000 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे 119 mm आ जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स है वो हम दूसरे लेक्चर्स में शुरू करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।